Good morning, students. As you all know that we are studying chapter structural organization in animals. And in that chapter, our next topic is frog. Now, I think you all have seen frog. Where frog is found? Basically, frog is found both on land and in water, or it is basically found in the ditches और जहाँ पे गड्ढे वगैरह होते हैं ना वहाँ मिलता है. Now, frogs can live both on land and in fresh water. That is why it is known as amphibia. Why it is known as amphibia? Because it can live on both on land and in water. And it is included under phylum Chordata. Chordata, what are chordates? Chordates are those which have notochords. Chordates show the presence of notochord, जिसमें notochord presence होती है. The most common species of frog found in India is Rana tigrina. The common species which is found in India is Rana tigrina, which is also known as bullfrog. They do not have constant body temperature, that is, their body temperature varies with the temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded or pyochilotherms. Now see students, frogs do not have constant body temperature, means their body temperature changes according to the change इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. जैसा जैसे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है. दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू कीप देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड और पायोकिलोथर्म्स. क्या कहते हैं इनको? कोल्ड ब्लडेड और पायोकिलोथर्म्स कहते हैं. You might have also noticed change in the color of the frog while they are in grasses or on dry land. They have the ability to change the color to hide them from their enemies, that is camouflage. This protective coloration is called mimicry. Now students, frogs also have ability to change their color according to the ground in which they are present. Why they are changing their color of the body? Just to protect themselves from the enemies. So this phenomena of changing the body color is known as camouflage. Now this protective coloration is called mimicry. What is mimicry students? तुमने देखा होगा in the TVs many peoples are they are doing acting of big stars. तो हम उनकी एक्टिंग निकाल रहे हैं ना, वो लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? मिमिक्री कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग निकाल रहे हैं या उनकी नकल निकाल रहे हैं, तो ये मिमिक्री ही है. तो वी कैन से दिस camouflage as mimicry. You may also know that frogs are not seen during peak summers and winters. During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep estivation and winter sleep hibernation, respectively. See, students, frogs show two other phenomena known as estivation and hibernation. Estivation क्या होता है? Summer sleep होती है और hibernation is winter sleep. Why they are doing such activities? They are doing such activities to protect themselves from extreme heat and cold. जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो these animals become inactive and they take shelters in the deep burrows to protect themselves from heat and cold. And the summer sleep, जब बहुत ज़्यादा आप गर्मी से बच रहे हो, that is known as estivation. And if you are protecting yourself from cold, then it is known as hibernation या winter sleep. Now we'll study about the morphology. You have ever touched the skin of frog. The skin is smooth and slippery due to presence of mucus. आपने देखा होगा जो the skin of frog is very smooth and slippery. Why it is smooth and slippery? Because of the presence of mucus. Mucus क्या है? It is a slippery material, slippery substance होता है ना. The skin is always maintained in a moist condition. और ये mucus क्या कर रहा है? Basically it is maintaining the skin moist or keep the body moist. The color of dorsal side of body is generally olive green का होता है, जिसमें बहुत सारे irregular spots या patches होते हैं. Ventral side का जो skin हो तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, that is pale yellow in color. आपने कभी नहीं देखा होगा कि frog ड्रिंक करता है वाटर. क्यों? इट एब्जॉर्व इट थ्रू द स्किन. ये बेसिकली पानी को एब्जॉर्व करता है थ्रू द स्किन.
Body of frog is divisible into head and trunk. Now the body of frog is divisible into two parts, that is head and trunk. It do not have head and tail. Above the mouth, a pair of nostril is present. Mouth के ऊपर you can see near the eye region, nostrils are present. A pair of nostril is present. Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protect them while in water. Now it has eyes जो बिल्कुल बाहर bulge मतलब बाहर निकली हुई होती है, and they are covered by a nictitating membrane. Now what this nictitating membrane is doing? It is basically protecting the frogs when they are in water. On either side of eyes are membranous tympanum या ear receive sound signals. Now on both the sides, in the head region, tympanum or ear is present. Now what this tympanum is doing? It is receiving the sound signals. The forelimb and hind limb. Forelimb होते हैं the legs which are जो पहले वाले जो legs ये है आगे वाले जो legs है उनको कहते हैं forelimbs, and the legs which are present behind the forelimbs are called as hind limbs, and basically they help in swimming, walking, leaping and burrowing. The hind limbs के अंदर कितने डिजिट्स होती है? 5 डिजिट्स होती है, और दे आर लार्जर और दे आर मस्कुलर. फोर में कितनी फिंगर्स या डिजिट्स होती है? 4 होती है. फीट्स कैसे होते हैं? इसके वेब्ड होते हैं. इसकी जो फीट्स होते हैं कैसे एकदम वेब होते हैं, एक जाल होता है जो क्या करते हैं बेसिकली दे हेल्प देम इन स्विमिंग. फ्रॉग एग्जिबिट सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मीन्स मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द female frog. Male frog, what the male frog is, how we will distinguish between male and female frogs? Male frog produced a sound, okay, and these sound are produced by vocal sacs. They basically the males have vocal sacs. मेल्स के अंदर क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल के सैक्स होते हैं, थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स. And the male are also has copulatory pads which are present on the first digit of the forelimbs. जो first digit होती है ना forelimb की, ये तो है, देखो forelimb देखो कहाँ पर है इसका, जहाँ पे इसका forelimb है ना वहाँ पे जो उसकी फर्स्ट और सेकेंड फिंगर उसके बीच में कॉपुलेटरी पैड्स बने हुए होते हैं, है ना, थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स. नाउ नेक्स्ट कम एनाटॉमी. एनाटॉमी में क्या है? The body cavity of frog accommodates different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive system with well-developed structures and functions. Now first we will study about digestive system. Digestive system consists of alimentary canal and digestive glands. What comes under digestive system? Alimentary canal and digestive glands. Now alimentary canal is short. You can see now you can see in figure 7.20. Now you can see in the pink color structure which you can see in figure 7.20 represent the alimentary system or the alimentary canal. It is short because frogs are carnivorous and hence the length of intestine is reduced. इसमें क्या होता है? intestine बहुत छोटा होता है क्योंकि ये carnivorous होता है. The mouth opens into the buccal cavity. इसका mouth is opening into the buccal cavity और buccal cavity leads to esophagus थ्रू फेरिंग्स. सबसे पहले क्या होता है? माउथ होता है. माउथ से के बाद क्या होता है? फेरिंग्स होता है. देन ईसोफेगस इज. ईसोफेगस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू अ स्टमक. देन स्टमक ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इनटू रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय क्लोएका. ठीक है ना. लिवर सिक्रीट बाइल्स. लिवर किसका सिक्रीशन कर रहा है? बाइल का. एंड दैट लिवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. पैंक्रियास. Pancreas is another digestive gland that produce pancreatic juice that contain digestive enzyme. Now food is captured by the bilobed tongue. इसकी कैसी tongue होती है? Bilobed होती है. And that help in capturing the food particles. Digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted by the walls of stomach. अब digestion कहाँ start हो जाता है? Basically stomach में हो जाता है, and stomach secrete HCl and gastric juices which act on food and convert the food into partially digested food, that is known as chyme. This chyme is passed to the stomach and then to small intestine
that is the first part of small intestine is duodenum. Then the duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. इसमें क्या होता है, फूड स्टमक में आता है, स्टमक में इसका पार्शियल डाइजेशन होता है, जिसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फूड को, काइम में कन्वर्ट कर देता है। काइम के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, डिओडिनम कहता है। अब डिओडिनम क्या कर रहा है, ये गॉल ब्लैडर से बाइल भी रिसीव कर रहा है और पैंक्रियास से पैंक्रिएटिक जूस को भी रिसीव कर रहा है ना। बाइल क्या करेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, इट्स मेन फंक्शन इज टू इमल्सिफाई फैट। ये फैट का डाइजेशन करता है बाइल बेसिकली। एंड पैंक्रिएटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। और पैंक्रिएटिक जूस किसका डाइजेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ना फाइनली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। और फाइनली डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। एंड डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाय एंड माइक्रोविलाय। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं। माइक्रोविलाय और विलाय क्या करते हैं, बेसिकली ये जो फूड का जो ऑब्जॉर्प्शन सरफेस, जो फूड के लिए जो ऑब्जॉर्प्शन सरफेस होती है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, what is happening in intestine? In intestine, the absorption of food particles takes place. Now the undigested solid waste move into the rectum and passed out through cloaca. cloaca से बाहर निकाल दिया जाता है। Now come respiratory system. Now frog respire on land and in water by two different methods. Now you all know that frog can live on both land and in water. So it has specialized structure to respire on land as well as in water. Now in water, skin acts as aquatic respiratory organ or cutaneous respiration. अगर frog land पे है, अगर फ्रॉग एक्ट इज एक्वेटिक, अच्छा अगर फ्रॉग if frog is in water then aquatic respiration occur and the respiratory organ which help in respiration in frog is skin. अगर frog वाटर में है तो स्किन इज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन और दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन किसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इट इज़ थ्रू डिफ्यूजन. और जब मतलब इफ फ्रॉग इज इन वाटर विच टाइप ऑफ respiration is occurring, cutaneous respiration, and cutaneous respiration is basically occur through skin. On the land, the buccal cavity, skin and lung act as a respiratory organ. Now if frog is on the land, then buccal cavity, skin and lung all three act as a respiratory organ. The respiration by lung is called pulmonary respiration. Now if the respiration is taking through lung, then this type of respiration is known as pulmonary respiration. Now जो pulmonary word होता है ना, वो basically lung से related ही होता है. Now the lungs are a pair of elongated पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अब इसके लंग्स क्या होते हैं, पेयर होते हैं, लंबे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, एक सैक लाइक होते हैं, एंड दैट आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन. बेसिकली थोरेसिक पार्ट में या ट्रंक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल. नाउ एयर इज एंटरिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इनटू द बकल कैविटी एंड दैन इट पास्ड इनटू द lungs. Now during estivation and hibernation, gaseous exchange takes place through skin. Now जब frog winter sleep या summer sleep पे जाता है, then how respiration is occurring? It is basically occurring through skin. Thank you students.